अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर जो है फर्स्ट ईयर का एफएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, तमाम पंजाब बोर्ड्स, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोदा, मुल्तान, बहावलपुर, डिज खान और आज़ाद कश्मीर के जो बच्चे हैं वो इस गैस से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ऑलरेडी जो है तमाम साइंस सब्जेक्ट के जो है वो गेस्ट पेपर जो है वो शेयर हो चुके हैं। इस वीडियो के नीचे भी मौजूद होंगे। अदरवाइज़ आप लोग जो हैं 11th क्लास फिज़िक्स गेस पेपर बाय HBS एजुकेशन सर्च करेंगे तो टॉप पर आप गेस नज़र आ जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो तमाम गेस पेपर जो हैं ऑलरेडी शेयर हो चुके हैं। तो आज जो है केमिस्ट्री का गेस पेपर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पेपर स्कीम जो है वो शेयर की हुई है कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएँगे, उसी के मुताबिक आप तैयारी करके कुछ चैप्टर छोड़ के मुकम्मल 100% तैयारी जो है वो कर सकते हैं। तो ये चैप्टर वाइज़ गेस है, तो पेपर स्कीम जो है वो भी आप सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को एंड में टैब नज़र आ जाएगा, वहाँ से भी आप लोग जो है देख सकते हैं। गैस की जानिब बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में भी और पेपर्स में भी इससे काफ़ी जो है हेल्प मिलती रहे। तो चैप्टर नंबर 1, पूरे गैस में जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनके आगे मैंने इम्पोर्टेंट मेंशन किया हुआ, जिनके आगे इम्पोर्टेंट मेंशन नहीं किया हुआ वो भी इम्पोर्टेंट ही हैं। क्वेश्चन मार्क जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है, तो आप जो है कुछ क्वेश्चन मैं पढ़ता जाऊँगा, बाकी स्पीड से हम आगे चलते जाएंगे ताकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबी ना हो। तो पेपर स्कीम लाजमी देखनी है आप लोगों ने। और एक बात और, जैसे ये N2 जो है फार्मूला जो है, तो इस तरह के फार्मूले, कंपाउंड्स और एलिमेंट्स के जितने भी वो होते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे मेरे पास मोबाइल में जो मैंने एडिटिंग की है, ये टाइप किया है, यहाँ पर पावर का या बेस का जो है ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए आप लोग जो है ये चीज़ें जो है खुद समझ जाइएगा। N2 and CO have the same number of electron, protons and neutron. Explain with the reason. What is a molecular ion? Give an example. Define cation and anion. What are isotopes? Why they are have same chemical but different physical properties. What is mass spectrum? Define molar volume and molecular formula. What is the function of 50% KOH and Mg CiO4? In combustion analysis, the difference between empirical and molecular formula: 180 gram of glucose and 342 gram of surcose have the same number of molecules but different number of atoms present in them. Explain. या फिर ये इस तरह भी आ सकता है, Avogadro number, give and example. Mg atom is twice heavier than that of carbon atom. Comment. Define mole and molar volume. Define gram formula giving one example. Calculate the number of molecules in 1 gram of ice. या फिर define mole with two example. Law of conservation of mass has to be obeyed during stoichiometric calculation. Justified. List steps involved to identify a limiting reactant. Define stoichiometry. Also write to assumption. Uh, Define limiting reactant. Give an example. Difference between actual yield and theoretical yield. Actual yield usually less than theoretical yield. Why? Next, chapter number 2. The concentrated HCL and KMnO4 solution cannot be filtered by Gooch, crucible.Give reason. How can the rate of filtration be increased? Name 4 important solvents chosen for crystallization. How undesirable colors are removed from crystals. Write down any two methods of drying of crystals. Why is there a need to crystallize the crude product? How crystals are dried using filter paper. Give its two advantages. नेक्स्ट पेज पर चैप्टर नंबर 2 के डिफाइन सब्लिमेशन एंड पार्टीशन लॉ. आल्सो गिव टू एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन. डिस्क्राइब एथर एक्सट्रैक्शन. डिफरेंस बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज. डिफाइन chromatography and give formula of distribution coefficient. Difference between adsorption and partition chromatography. Define RF value and why it has no unit. Give two uses of chromatography. Next, chapter number 3. Define Boyle's law and give its mathematical expression. What is absolute zero?
व्हाट हैपन टू रियल गैसेज वेल अप्रोचिंग दिस टेम्परेचर, या फिर ये इस तरह भी आ सकता है वह एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ अनअटेनेबल, ये थोड़ी गलती हो गई है तो अनअटेनेबल है। तो नेक्स्ट है स्टेट चार्ल्स लॉ एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। SO2 is non-ideal at 273 K but behaves like an ideal gas at 327 K. Justify the statement. Next है prove that D is equal to PM over RT. उसके बाद है calculate the value of gas constant R in SI unit. नेक्स्ट पेज चैप्टर नंबर 3 का। डियर स्टूडेंट, जिन चैप्टर में से 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं और चैप्टर जो है लॉन्ग है उसमें से शार्ट थोड़े ज़्यादा हैं, अदरवाइज 10 12 12 हैं, और ज़्यादा से मुराद मतलब 15 से 16। ड्राइव एन एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ अ गैस फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। डिफाइन एवोगैड्रो लॉ ऑफ गैसेज। Parrots feel uncomfortable breathing at high altitude. Justify. How Dalton's law of partial pressure is useful in determining pressure of gas collected over water. Define Dalton's law of partial pressure. Give mathematical expression. State Graham's law of diffusion and write its mathematical form. While lighter gases diffuse more rapidly than heavier gases, difference between diffusion and effusion of gases. List 4 postulate of kinetic theory of gases. Last page, chapter number 3 का describe two causes of deviation from ideality. Explain Boyle's law in the light of kinetic molecular theory of gases. Water vapor do not behave ideally at 273 Kelvin. तो इसको आपने जस्टिफाई करना है, क्यों, रीज़न बतानी है। डिफरेंस बिटवीन क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। स्टेट जोल थॉम्सन इफेक्ट वे इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू H2 gas. Gives units of van der Waals constant A and B. Define plasma. State give its two application. Give two characteristics of plasma. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4। डिफाइन dipole-dipole forces with example, या फिर डिस्क्राइब solubility of hydrogen bonded molecules. where H where HF is weaker acid than HCl. Ice float on H2O या water. Give reason. Describe the importance of vacuum distillation. Earthenware vessel keep water cool. Explain. Evaporation causes cooling. Justify it. Why do we feel cooling effect after taking bath? Justify the evaporation take place at all temperature. Why heat of sublimation is greater than the heat of vaporization? Define boiling point. उसके बाद नेक्स्ट पेज पर चैप्टर नंबर 4 की क्वेश्चन। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिफरेंट एट मरी हिल्स एंड एट माउंट एवरेस्ट। हाउ? डिफाइन लिक्विड क्रिस्टल विद एग्जांपल। आल्सो गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। डिफाइन isomorphism with two example. Define polymorphism with example. Define transition temperature with two example. Cleavage of the crystal is itself anisotropic given reason. Define unit cell with example. Ionic crystal are highly brittle. Why? Sodium is a good conductor of electricity but NaCl is not. Given reason. Give reason. Ionic solids do not conduct electricity in solid state. Give reason. What is a lattice and lattice energy? Graphite is conductor but diamond is insulator. Give reason. Write 4 properties of molecule solids. Heat of sublim. Yeah, next question है. Heat of sublimation of iodine is very high. Justify. How electrical conductivity of metals decreases by increase the temperature. Next, chapter number 5. The E over M value of positive rays obtained from hydrogen gas is 1836 times less than that of cathode rays. Justify. Write 4 properties of positive rays. Whatever gas is used in the discharge tube, the nature of the cathode rays remains the same way. Why it is necessary to decrease the temperature in discharge tube to get cathode rays. What are canal positive rays? Give reason for the production of positive rays. ये इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है कि किनार रेज को पॉजिटिव रेज क्यों कहा जाता है. How neutron were discovered by Chadwick? Give the equation of nuclear reaction involved.
Chapter number 5, next question. Calculate the mass of an electron. E over m is equal to 1.7588 multiplied 10 raised की power 11. ये 10 की power 11 है, याद रखिएगा. कॉलम kg की power -1. Next है difference between frequency and wave number. Give two postulate of Planck's quantum theory. Give two defects in Rutherford atomic model. Give two defects in Bohr atomic model. Describe Stark and Zeeman effect. Difference between line spectrum and continuous spectrum. Difference between atomic emission and atomic absorption spectrum. उसके बाद लास्ट पेज चैप्टर नंबर 5 का स्ट्रेट मोजली लॉ विद मैथमेटिकल फॉर्म. डिफरेंस Heisenberg principle of uncertainty and give its mathematical expression. Define orbit and orbital. Define Hund's rule, Pauli exclusion principle, wavelength and Aufbau's principle. तो इनको आप लोग देख लें, फिर हम नेक्स्ट पेज पर. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6. तो चैप्टर नंबर 6 में सबसे पहले डिफाइन ऑक्टेट रूल. गिव टू एग्जांपल ऑफ कंपाउंड विच डू नॉट ओबे दिस रूल. कंपेयर बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी. गिव टू फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स. व्हाई एटॉमिक रेडियस इज ग्रेटर देन cationic radius. Why cationic radius is smaller than parent atom. Why atomic radii of the atom cannot be determined precisely. Define electronegativity. Give its trend in periodic table. Ionization energy decrease down the group although atomic number is increase. Explain it. Chapter number 6 का next page. Define ionic and covalent radii. How coordinate covalent bond differ from covalent bond. What is coordinate covalent bond? Give example. Give any two postulate of valence shell electron pair repulsion theory. Both NH3 and BF3 are tetraatomic but different geometric way. Write 2 points of valence bond theory. Sigma bond is stronger than pi bond. Why? Define orbital hybridization of orbitals. Pi bonds are more diffused than sigma bonds. How? Define bond order and what is bond order of O+2. मतलब O की पावर +2. उसके बाद पेज नंबर नेक्स्ट पेज पर चैप्टर नंबर 6 का लास्ट पेज. MOT is superior to VBT. Explain the abnormality of bond length and band strength in HI is less prominent than that of HCl. Why? Bond distance is compromise distance between two atoms. Explain with reason. Define dipole moment and give its mathematical form and SI unit. Next chapter number 7. Difference between spontaneous and non-spontaneous reaction. Burning of a candle is a spontaneous process. Justify. Difference between exothermic reaction and endothermic reaction. Difference between system and surrounding. Define state function. Difference between internal energy and enthalpy. Prove डेल्टा E इज इक्वल टू Q. ये इक्वेशन दी हुई है, इसको आप देख लीजिएगा. स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विद इट्स मैथमेटिकल फॉर्म. Chapter number 7 का next page. State with one example enthalpy of combustion and enthalpy of solution. Define standard enthalpy of atomization with an example. Enthalpy of neutralization is for an acid and base. Explain with example. Why is necessary to maintain the physical state of reactants and products in thermochemical reaction. State the Hiss's law of constant heat submission. Define Bond-Haber cycle and lattice energy. Next, chapter number 8. Difference between reversible and irreversible reaction. State law of mass action. How Kc predict the extent of chemical reaction. What is the effect of catalyst of equilibrium constant. State Le-chatlier principles. What are conditions of maximum yield of NH3. या फिर ये सवाल इस तरह भी पूछा जा सकता है. What are optimum conditions for the synthesis of NH3. What is ionic product of water. How does this value is changed by change in temperature. उसके बाद चैप्टर नंबर 8 के नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन. डिफाइन pH एंड POH. गिव इट्स इक्वेशन. कैलकुलेट pH ऑफ 10 की पावर -4 मोल डेसीमीटर क्यूब of BaOH2. Define acid and base by Lowry-Bronsted concept. Explain the term buffer and buffer capacity.
How does a buffer act? Explain with example. Write two uses of buffer solution. What is common ion effect? Give an example. What is effect of ion on solubility? Solubility of glucose increase in water by heating. Give reason. Define solubility product and write down its application. Next, chapter number 9. 1 molar solution of glucose in water is diluted as compared to 1 molar solution of glucose. Justify. Define molarity and molality. Give mathematical form. 1 molar solution of urea is more dilute as compared to its 1 molar solution. What do you mean by mole of fraction of solution? Difference between zeotropic and azeotropic mixture. Define fractional crystallization. How is it useful? What is upper consolidate temperature and give one example. उसके बाद चैप्टर नंबर 9 का नेक्स्ट पेज गिव टू डेफिनेशन ऑफ रॉल्स लॉ where the non-ideal solution do not obey the Rolle's law. Difference between ideal and non-ideal solutions. Define solubility. Give one example. Define collective properties. Name important colligative properties. Boiling point of liquid are increased when solute is added to them. Give reason. Difference between hydration and hydrolysis with two example. Aqueous solution of CuSO4 is acidic in nature. Justify it. Next, chapter number 10. Define electrochemistry. Define oxidation state with two examples. Calculate the oxidation number of chromium in a Cr2SO4 base 3. फिर K2Cr2 Cr की पावर 2 और 7. ये देख लीजिएगा, मैंने आपको पहले भी कहा है कि पावर की या बेस की ऑप्शन नहीं थी कीबोर्ड पर. Calculate oxidation number of Mn in KMnO4 and Na2MnO4. Determine oxidation number of Mn in KMnO4 and K2MnO4. Difference between electrolytic and galvanic cell. A porous plate or a salt bridge is not required in the lead storage cell. Give reason. Impure copper can be purified by electrolytic process. Explain it. Explain the function of salt bridge. A salt bridge maintains the electrical neutrality in galvanic cell. Explain. Define oxidizing agent. Reducing ये इकट्ठा लिखा गया है. Oxidizing reducing agent and electrolysis. Define standard electrode and potential. SHE act as anode when connected with Cu electrode, but as cathode when connected with Zn electrode. Justify. NaK can display hydrogen from acid, but Pt, Pd and Cu cannot comment on it. Next, chapter number 10 का page. Difference between primary and secondary cells. Give the reaction involved when lead accumulator, lead storage जिसको battery कहते हैं, is discharged. Explain through equation law. Lead battery is recharged. Write down the reaction of alkaline battery. Give some advantages of fuel cells. Next, chapter number 11, आखिरी chapter. Define order of reaction with example. Define negative catalyst along with an example. Rate of chemical reaction is an ever charging parameter. Give reason. Define instantaneous and average rate of reaction. What is pseudo first order reaction? Give an example. How does surface area affect the rate of reaction? State rate of reaction and give its chemical reaction. Give its unit. What is specific rate constant or velocity constant? To radioactivity decay is always first order reaction. Explain. Last page, chapter number 11 का define half life period, how it is used to determine the order of reaction. Define activation energy and activated complex. Discuss autocatalyst with example. Define catalyst, also difference between its two types. Give two characteristics of enzyme catalyst. Define catalytic poisoning with example. Enzymes are specific in action. Justify. तो डियर स्टूडेंट, ये आप लोगों के 11 चैप्टर की शॉर्ट क्वेश्चन है. आप लोगों को पेपर स्कीम जो है वो नज़र आ रही होगी, तो इसको आप लोग जो है देख लीजिएगा पेपर स्कीम को. चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा. इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों के साथ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो शेयर करूंगा और पेपर स्कीम भी लॉन्ग क्वेश्चन की. यहाँ पर जो पेपर स्कीम नज़र आ रही है कंप्लीट पेपर स्कीम है लॉन्ग एंड शॉर्ट की. दुआओं में याद रखिएगा. बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम. अल्लाह हाफिज़.